Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System of Pakistan. This video session is for English text for class 7 and this is lecture number 2C. In this video session, we will discuss section 3 of reading text. So my dear student, take out your English book 7 and open page number 5. Ali was tired after a whole day's campaigning program against pollution that his group had arranged for the neighborhood people, particularly the boys of their own age. They had made posters and shown these to all the people who had come to the program to raise awareness about the dangers of pollution. They had also distributed the handbills and they had made. These handbills listed the steps that the youth could take to fight pollution. They also presented role plays and gave speeches. In the end, they shared an action plan for cleaning their neighborhood. All the attendees were invited to participate in the activity. The program was a big success. Almost everyone agreed to do something. Ali and his friends prepared a list of things to be done, who would do them, and by when it would be done. They were all tired but very happy. They had taken a big step in the right direction. Now you have to read after me. Ali was tired after a whole day's campaigning program against pollution that his group had arranged for the neighborhood people, particularly the boys of their own age. They had made posters and shown these to all the people who had come to the program to raise awareness about the dangers of pollution. They had also distributed the handbills that they had made. These handbills listed the steps that the youth could take to fight pollution. They also presented role plays and gave speeches. In the end, they shared an action plan for cleaning their neighborhood. All the attendees were invited to participate in the activity. The program was a big success. Almost everyone agreed to do something. Ali and his friends prepared a list of things to be done, who would do them, and by when it would be done. They were all tired but very happy. They had taken a big step in the right direction. Now I explain this for you. Ali and his group had arranged a whole day's campaigning program against pollution for the neighborhood people. They had made posters to raise awareness about the dangers of pollution. They also made
and distributed the handbills and listed necessary steps that the young people could take to fight pollution. They also presented tableau and gave speeches. In the end, they invited all the attendees to participate in the activities for cleaning their neighborhood. Almost everyone agreed to do something. Ali and his friends prepared a list of things to be done and assigned the task and the deadlines to the different group of people. They were all exhausted, tired, but very happy because they had taken a big step in the right direction. होता कुछ यूँ है बेटा कि अली और उसके ग्रुप जो है वो एक प्रोग्राम कैंपेन अरेंज करता है पॉल्यूशन के खिलाफ, और उनके जो नेबरहुड के लोग हैं उनको, जो आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, उसमें उनको सबको इनवाइट करता है, ख़ास करके उन लड़कों को जो उनकी अपनी एज के होते हैं। और फिर इसके लिए वो पोस्टर्स बनाते हैं, जिस पोस्टर्स के अंदर वो लोगों में अवेयरनेस बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें कि पॉल्यूशन के क्या ख़तरात हो सकते हैं, पॉल्यूशन से क्या नुकसानात हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें पोस्टर के ज़रिए से लोगों को समझाते हैं। साथ ही में वो हैंडबिल्स भी बनाते हैं। हैंडबिल्स क्या होते हैं, वो आपने देखा होगा ना न्यूज़पेपर में येलो कलर के या पिंक कलर के कुछ छोटे छोटे से पेपर्स, या फिर कुछ और गाड़ियों में हम जा रहे होते हैं तो रास्ते में देते हैं, तो हैंडबिल्स बनाते हैं। उस पर भी ये स्टेप्स लिखे हुए होते हैं कि यंग पीपल को, जो नौजवान नस्ल है, उसको पॉल्यूशन से फाइट करने के लिए क्या करना चाहिए। और साथ में फिर वो कुछ रोल प्लेस, यानी कि कुछ ड्रामा या कुछ टैबलू भी ऐसे करके दिखाते हैं जिसमें वो आपस में डायलॉग्स करते हैं और उससे पता चलता है कि पॉल्यूशन के क्या नुकसानात हैं, और इसके ऊपर वो तकारीर भी करते हैं। उसके बाद फिर वो अपने जितने भी अटेंडीज़ होते हैं उन सबको इनवाइट करते हैं कि वो इस एक्टिविटी का हिस्सा बने, इसमें पार्टिसिपेट करें, और बहुत कामयाबी होती है क्योंकि सारे ही लोग कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अली और अली के दोस्त एक लिस्ट तैयार करते हैं इस तरह की, जिसमें कौन सा काम किसने करना है और कब करना है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती हैं। अली और उसके दोस्त बहुत थक तो जाते हैं लेकिन बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया होता है बिल्कुल सही डायरेक्शन में। So here we have understood the whole text. So now we are doing its exercise. It has while reading. It has two exercises. The first one this and the second is this. Vocabulary. Okay. So what we have to do in this exercise, read the text and match the following titles with 3 sections of the story. One title is extra. बेटा हमने इस चैप्टर में 3 sections पढ़े हैं. That is section 1, then section 2, and today we have अंडरस्टूड सेक्शन 3। तो आपने क्या करना है, ये जो टाइटल्स 4 टाइटल दिए हुए हैं, तो ये हर सेक्शन को एक टाइटल आपने देना है कि कौन सा सेक्शन पे कौन सा टाइटल सूटेबल है। एक इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ओके। उसके बाद क्या करना है, एक्सरसाइज 2 में हमें क्या करना है, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग। द सेक्शन इन विच द वर्ड कैन बी फाउंड इज गिवन इन द ब्रैकेट्स आफ्टर ईच वर्ड। राइट द आंसर इन द आंसर कॉलम फॉलोइंग द एग्जाम्पल। The first one has been done for you। ठीक है। बिफोर देखो, चैप्टर शुरू करने से पहले हमने वर्ड्स मीनिंग डिस्कस किए थे, जो आपने, आई होप यू मस्ट हैव लर्न दोज मीनिंग्स, वर्ड्स मीनिंग्स। ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। फर्स्ट वन उन्होंने आपको करके बताया, जैसे इंथुजियास्टिक, ये पैराग्राफ 1 में हमें मिलेगा, और इसकी मीनिंग क्या है, जी इन्होंने दी, हम जी देखते हैं। वेरी एक्साइटेड और इंटरेस्टेड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 जी, यहाँ पे उन्होंने सॉल्व कर दिया। द सेकंड वन इज सोशल कैंपेन्स। सोशल कैंपेन्स का मीनिंग हमने पढ़ा था समाजी सरगर्मियाँ। ठीक है। अब इसमें इसकी मीनिंग हम लोग फाइंड करते हैं, कहाँ पे मिलेगी, ये आ गई हमें। एक्टिविटीज टू मेक पीपल अवेयर अबाउट समथिंग, इट मीन्स जे। तो 2 का आंसर क्या होगा, इट इज 2 जे। ओके, तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। I hope you have understood well, but if you find any difficulty and any problem in doing your exercise, do text me. I will give you an immediate feedback. Inshallah, now we will meet in the next video, in the next class. Till then, take good care of yourself. Assalamu alaikum.